Good evening, all of you. A very good evening. Who all are there? Good evening, Vanshaj. Okay, so let's start. A quiz has been published. Did you see that quiz, Vanshaj? And anybody else who is watching this? Yeah, it has 100 questions, speed calculation questions. Nothing difficult, but yeah, it is timed quiz, and all the previous sessions have been uploaded over there. So in case someone doesn't know where to fetch it, I just want this is where we go. Okay, I have pinned the message. Okay, so if someone just, a lot of people actually missed the live class. So all the recordings are available. Did you check that? Ojasva and Vanshaj? Okay, so now, were you excited about the kind of thumbnail that was made? The topic, Brahmaganit. So Brahmaganit is a treatise of 9 theorems developed independently by me, out of which one is very much applicable, and we call it Mool Varg Siddhant. Okay, Mool, just take it. Yeah, Mool Varg. Now you will see, oh, I'm teaching in Hindi, Sanskrit, Siddhant. I chose a Sanskrit name because the simple reason that it should look like, it should sound like Indian. But in English, we call it Mool is base, Varg is square, Siddhant is principle. Base, square, principle. So let's study what exactly it means. All right. First of all, base. Base of a number, mool of a number, right? Number, let's say number is n. This is always the nearest multiple of 50 to the number n. Okay, so nearest multiple 50 to the number n. What's the same problem? Okay, the same problem. Just a moment, it'll be sorted now. Now it's visible. So note this down first of all. Cool. So for example, the number is 32. Tell me what will be its base, and number is 68. What will be its base? If number is, let's say, 91, what will be its base? Number is, let's say, 122. What will be the base?
Nearest multiple of 32, nearest multiple of 50 to 32 is what? It's 50. To 68 is also 50. To 91, it's 100. To 122 is 100, isn't it? So, what exactly happens? What exactly happens? I told you the prerequisite that you need to remember all these squares from 1 to 25. So, what does that mean? That if a number, let's say 26, its base will be 50 because it is nearest to 50. If the number is, let's say 76, its base will become 100, isn't it? Right? So, 24 अगर एक नंबर है, अगर एक नंबर 24 है, तो उसका तो बेस कुछ होगा नहीं क्योंकि 1 से 25 हमें स्क्वायर सारे याद है. बट नंबर 26 अगर हो गया तो उसका बेस बन जाएगा 5050. इज दैट राइट? दैट्स गोइंग टू हैपन. यस और नो? समझ में आ गया? ठीक है. अच्छा, अगर नंबर 75 हो गया तो ये 50 के भी पास है और 100 के भी पास है. तो ये जो होंगे बीच वाले नंबर्स होंगे, जो 75 हो गया, 125 हो गया, ये सब नंबर्स. तो इनके लिए हमें क्या करना है, पहले वो सीख लेते हैं, फिर हम मूल वर्ग सिद्धांत सीखेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, any number, let's say it ends at 5. Okay. And just before 5, we have a. It can be 25, 35, 55, whatever. So these numbers, their square will always be a multiplied by a plus 1 followed by 25. A multiplied by a plus 1 is the successor of a. So for example, if you want to find the square of 75, you just have to multiply 7 and 8 and then followed by 25, you will get 5625 as the answer. Is that clear, everyone? Similarly, the number let's 35 is applicable for all the numbers which end with 5. I'll get this as the square. 1, 2, 2, 5. Cool. You got that? Let's say number is 125. The square will be 12 into 13 followed by 25. So I'll get 15625. Is that clear? Is that clear? Got it? All of you understood this? Tell me in the comments. Understood? ठीक है. तो अब कोशिश करते हैं समझने की, भाई जो मूल वर्ग सिद्धांत है वो कैसे इस्तेमाल किया जाए. तो just join. This is what we'll be using for the numbers that end at 5. Now, having said that, let's try to use this. So I told you that the mool or the base of a number, it is nearest multiple to 50. So here are certain examples. So let's see how it actually works. ठीक है. तो मान लो कोई नंबर है, एक एक जो मूल है, पहला मूल will be 50, isn't it? And its square is 2500. So I'll put an underline at 0 0 and underline at 25. So this 0, why this 0 occurs? This 0 occurs because here we have 1 0 and its square becomes two zeros. 1 0 becomes two zeros.
If I take the square, yes or no? Right. So what is this going to represent? We'll learn that. Let me give you an example. Let's say I want to calculate square of 42. 42 का मूल है 50. 42 50 से कितना कम है? 8 कम है. So इस 25 में I'll subtract 8 and then I will accommodate the square of वही जो subtraction जो -8 था वो यहाँ पे. So square of -8 is basically +64 only. What do I get? I'll get 1764 and that is the answer. This can be done mentally also. Do you understand that? 42 का स्क्वायर. तो अभी कभी भी अगर सामने सवाल आएगा तो ऐसा तो बोलेगा नहीं कि भाई पहले 50 लिख लो फिर 42. तो 42 अगर आ गया सबसे पहले आपका काम क्या है? यू नीड टू आइडेंटिफाई द मूल और द बेस and then see what is the deficit or the excess. Let me give you one more example. 56. 56 is 6 more, right, than 50. So what you will do, you will add 6 to this 25 and then you will write 6 square over here. So you'll get 3136 as the final answer. Clear? अब यहाँ स्क्वायर नेगेटिव का हो या पॉजिटिव का हो हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा स्क्वायर में, isn't it? Is minus multiplied by minus is also plus. Is that clear? Now, the problem will be in the cases where, let's say, I want to calculate square of 62. What is 62? 62 is 12 more than 50, isn't it? So 25 से 12 बढ़ा दो और फिर 12 का स्क्वायर लिख दो. Okay, 25 plus 12 is 37. 12 का square is 144. Now it is 3 digits, so only 2 will stay and 1 goes to carry forward. So the answer is 3844. Right? Right? So if I want to generalize this, so I have a number. Let's say the number is any number जिसका स्क्वायर निकालना है वो 50 से x ज्यादा या x कम होगा. ठीक है. ठीक है. तो इसका स्क्वायर जो होगा स्क्वायर वो हमेशा 25 से x ज़्यादा या एक x कम, इसको अंडरलाइन कर लिया, एंड जो भी प्लस x या माइनस x है उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया. नाउ दिस थिंग विल बी अ 2-digit number always. Clear? So if it's a 3-digit number, I'll use the carry forward, and if it's a single digit number, then what is going to happen? For example, square of 52. 52 is 2 more than 50, right? So 25 plus 2 is 27 and square of 2 is 4, but I need 2 digits. So I'll put a 0 and this is what the answer is. Is this clear? All of you, is this clear? Vanshaj, Ojaswa, and who all are there? First of all, tell me who all are here and have you understood this? तो देखो तीन चीजें हो सकती है कि हमारे पास जैसे 52 केस में स्क्वायर एक ही डिजिट आए तो 0 लगा दिया, 2 डिजिट्स आए तो हम तो वो चाहते ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे आया यहाँ पे आया, 3 आ गए तो एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया. नाउ बिफोर वी मूव अहेड, टेल मी हाउ डू यू लाइक दिस? Isn't this interesting? Do you love it? Looks good, huh? Let's do a few questions. एक मैं और करता हूँ फिर मैं जल्दी से एक छोटा सा एक तुमसे लोगों से एक क्विज टाइप करूंगा. 39. 39 अब 50 सामने लिखा नहीं है. 39 is 11 less than 50. So 25 minus 11 is what we do. And then square of minus 11 is what we will accommodate here. 25 minus 11 is how much? It's 14. This is 121. 21 stays. 1 goes to carry forward. I get 152 as the answer. How cool is that? Clear?
Now, let me give you a quick quiz. Okay, ready for that? Let me give you five such problems to be done in 4 minutes. Okay, we'll start here. 32 square, 47 square, 73 square, 69 square, uh-uh, 58 square. Here we start the timer. Let's see. Answer's coming wrong. Chalo, let's see. Now, 32 is what? 50 minus 18. Okay, so for the when you start practicing, you should first of all identify the base and then how much less or more is it. 47 is 3 less, right? 73, it's 23 more. 69 is 19 more. मैं लिख रहा हूँ just for the sake of making you understand. ये 58 is 8 more. Okay, so what I told you. Now, 25 minus 18 should be the first digits, first two whatever digits, and then I should get this. Okay,
Here, 25 minus 3 and square of minus 3. Here, 25 plus 23, then square of 23. Isn't it? Here, 25 plus 19 and then square of 19. Here, 25 plus 8 and then square of 8. Cool. That's what we are concerned about. And we should have only two digits in the end. 25 minus 18 is how much? It's 7. And square of minus 18 is 324. 324. 24 should stay. 3 should go here. Right? Here, 25 minus 3, 22. Minus 3 ka square is 9. I need to require two digits. So 0, 9, and that's all. I got the answer. 25 plus 23 is 48. And 23 square is 529. Only 29 will stay. 5 will go here. Right? Here, 25 plus 19 is 44. And 19 square is 361. 61 stays. 3 should go here. 25 plus 8 is 33. 8 square is 64. And that's all. We got the answer directly. So this will be 1024. 7 plus 3 is 10. This will be 5329 because 48 plus 5 is 53. And this will be 4761 because 44 plus 3 is 47. Cool. So just now tell me what was the mistake that you committed? What mistake did you commit? One judge, all your answers are correct? Very good. Silly mistake. What was the mistake? Tell me, tell me, tell me. Hmm. Chalo. No worries. Now, the next should automatically be, I hope you have understood, the next mool or the base, okay, should be what? 100. Now I want you to see this very clearly. So I just write things and you will, automatically get that what exactly is happening over here. 100 square is 10,000. यहाँ भी ये दो zero है ना, यही important है जो end में रहेंगे, that because that gives us enough idea that there'll be only two digits allowed in the end. If I write 101 ka square, I'll get 10201. So before I explain it to you, you will tell me what exactly can you see as a pattern. This will be 9801. If I put this will be 10404. If I take 98, I'll get 9604. If I take 103 here, I'll get 10609. If I take 97 over here, I'll get 9409. Now, before I tell you, you will tell me what exactly is happening. What's the exact difference between Mool 50 and Mool 100? Okay, just well, that happens. So, tell me about this. What's the similarity between Mool 50 and Mool 100? What's the difference? The similarity is in the last two digits, isn't it? कि जितना भी मूल से एक्सेस या डेफिसिट आ रहा है उसका ही स्क्वायर एंड में आ रहा है ये तो कंफर्म है yes or no this is one less this is one more so in both the cases I'm getting 01 in the end 98 is 2 less and 102 is 2 more so I'm getting the square of 204 in the end that's a similarity the difference is कि वहां पे 25 में से ना एक कम या एक ज्यादा हो रहा था पर यहाँ पे दो कम या दो ज्यादा हो रहा है right? So why that happens? Because 50 is basically
basically 200 is basically 2 multiplied by 50. So everything gets double. Distance becomes double. Right? Cool. So now if someone asks you what is the square of 109, तो क्या करोगे? 9 की दूरी है पर दो दो बार. So 9 2s are 18. There will be 118. ठीक है. और 9 का स्क्वायर इज 81. We got the answer. अच्छा एक बात सोचो. तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी एकदम से तुम काफी स्मार्ट फील करोगे इसके बाद कोई बोलेगा 110 का स्क्वायर यू विल जस्ट से इट आउट लाउड 11881. समवन आस्क्स यू स्क्वायर ऑफ 117, है ना? तो 17 का डबल इज 34. 134 is what I get. And 17 square is 289. Only 89 will stay and 2 will be carried forward because only two digits are allowed in the end. So I'll get 13689. कुछ समय के बाद तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो तो इस तरह के नंबर्स भी ओरली सॉल्व कर लोगे. जैसे कि मान लो नंबर इज 83 का स्क्वायर. 83 नहीं, कुछ और लेता हूँ मैं. लेट्स से द नंबर इज 87 का स्क्वायर. 87 is 13 less than 100. So I'll have to subtract 26 from here. I'll get 74. And 13 square is 169. 69 stays, 1 goes to carry forward. I get 7569 in the end. Isn't this fascinating? Magical? तो इससे पहले कि तुम लोग उस भीड़ में और होड़ में लग जाओ कि जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें, थोड़ा सा सांस लेते हैं गहरी, आराम से देखते हैं और इस मज़े को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, है ना? कि क्या ये मज़ेदार चीज़ नहीं है यार? ठीक है, कैट तो बाद में होगा, नवंबर की बात है, अभी उस पर थोड़ा सा उसको भूलते हैं. लर्निंग करते हैं बिना किसी मोटिव के तो वो रियल लर्निंग होती है कि भाई हमें मज़ा आ रहा है इसलिए हम सीख रहे हैं. बाद में उसका फायदा होगा, कैट का एग्जाम निकलेगा, कॉलेज मिलेगा, पैकेज बढ़ेगा, दुनिया भर चीजें होंगी, तब वो बात की बातें. फिलहाल उसको छोड़ देते हैं. कृष्ण भगवान की तरह काम करते हैं कि कर्म करेंगे देखेंगे फल जो होगा वो तो मिल ही जाएगा, अच्छा कर्म करेंगे तो फिलहाल अभी सिर्फ क्यूरियोसिटी और उस मैजिक के लिए पढ़ाई करते हैं. क्या लग रहा है, मैजिक नहीं लग रहा? उस प्रेशर से हट जाओ कि तुम्हें कल को कैट क्लियर करना है. फिलहाल अगले 3 महीने प्रेशर लेना ही नहीं है वो वाला. तुम्हें बस ये मजे ले रहे हैं कि यार देखो यार क्या मस्त चीज चल रही है आसपास हमारे. इतना बढ़िया भी हो सकता है मैथमेटिक्स जो इतना बोरिंग लगता था. क्या ऐसी फीलिंग आ रही मनुष्य जन्म पर? अगर नहीं आ रही तो उस फीलिंग को लो. उस चीज को एक एक एंजॉयमेंट की तरह लो कि यार मैंने कुछ क्या मस्त चीज सीख ली है यार, ये तो बड़ी कमाल की बात है. इसको फ्लेक्स कर सकता हूँ जाके मैं अपने 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 फ्रेंड्स के सामने, फैमिली के सामने. राइट? है ना? ठीक है, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं. लेट्स से, अच्छा मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ. 119 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 124 square, and then I'll give you, let's say, 82 square. Only these four. Here is the timer. अभी जो 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ ना, यही कुछ टाइम के बाद 10 सेकेंड्स में होना शुरू हो जाएगा.
वंशिज बड़े फास्ट कर रहे हैं यार। कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहे ना? State level abacus champion. Oh, वंशिज, that's really good. अभी टाइम बचा है, ठीक है, I'll wait. Others also come up with your answers. Okay, 119. तो 19 का डबल करना पड़ेगा, दैट इज 38. So 100 plus 2 into 19. Let me write it like this, okay? Expanded version. 19 square. This 100 minus 2 into 23. यहाँ पे minus 23 का square. Here 100 plus 2 into 24. इधर 24 का square. Here 100 minus 2 into 18. यहाँ पे minus 18 का square. Good. क्या वंशज मिटा के दिया मैसेज, अच्छी बात है. 138, 361. So 3 will be carried forward, right? Here, 100 minus 46 is how much? 54. All right, 23 ka square is 529. 29 will stay, 5 will be carried forward. 100 plus 48 is 148, right? 24 square is 576. 76 stays and 5 will be carried forward, right? This 100 minus 36. I'll get 64 and this is 324. 3 will be carried forward. So what do I get? I get 14161 here. Then I get 5929 over here. Here I get 15376. Here I get 6724 as the final answer. Is that cool? Is that clear? Got it, all of you? क्लियर है? देखो, अब ये जो बताया मैंने, ये ना, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर दिस, माय 12th ईयर ऑफ टीचिंग. सो आई हैव बीन टीचिंग दिस फॉर 12 इयर्स, सो इट्स इजीली एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट. इसके आगे मैंने बहुत कम जगह बताया है कि ना, हम किसी भी तरह के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कैट के बाहर भी जाएगा, जरूरत भी नहीं है. आई थिंक वंशज माइट बी नोइंग इट, राइट वंशज? वंशज, कहाँ तक ये तुम कर लेते हो इजीली थ्रू अबैकस? And also, one should just call me once, okay? After session is over, just call me once. I want to talk to you.
regarding abacus. ठीक है? Now, here we go. So now you will tell me the next mool or the base will be 150. And what is 150? It's 3 times 50. So what's gonna happen? What's gonna happen? 150 square is 22500, right? How do you want to know this? Because 15 square is 225, isn't it? 2 digits into 2 digits. Okay, बच्चे, ठीक है? तो अगर मैं इसके पीछे जाता हूँ 149, यहाँ पे एक कम हो गया, तो ये 3 कम हो जाएगा. I'll get 222 और 1 का स्क्वायर तो 0 1 ही होता है. This is the answer. Do you understand that? So let's say if someone asks me 159 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9, this is 9 more, 3 times is 27, 225 plus 27 is 252, right? And 9 square is 81, and that is the answer. Isn't this fascinating? कैलकुलेटर्स जल्दी तुम लोग कर लोगे इस बात को, इस काम को. ये समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिफिकल्टी कहाँ पे होगी, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करने में डिफिकल्टी हो सकती है थोड़ी बहुत. जैसे कि मान लो कोई बोले कि यार 171 का स्क्वायर क्या होगा, दिस 21 मोर, सो 21 इंटू 3 इज 63, 225 प्लस 63. देखो 225 है प्लस 21 इंटू 3, राइट? And then 21 का square. So if you write it like this, it'll be clear. But I want you to start doing it in your mind. That will take time for sure, but not much time. एक दिन में भी हो सकता है वो, है ना? एक दिन में एक्सपर्टीज नहीं आएगी, बट करते रहो तो हफ्ते भर में हो जाएगा. So I get 288 here and 441 here. This 41 stays, 4 goes here. I'll get 292 and then 41. 2924 is the answer. Is that clear? So more you practice, better you get. You know the logic now? And you know what? Vargamul Siddhant is not just this. It goes beyond multiple limitations. And there is one more, what do you say, um, interpretation of this, but I don't want to tell you that today. The reason is simple, because first I want you to be an expert in the squares from 1 to 175. Now, ये मैंने रेंज कैसे दे दिया? ये ऐसे दे दिया कि first thing, the prerequisite, all right, the prerequisite is that you will learn, you already have learned all these squares from 125, yes or no? Now, at Mool 50, at Mool 50, 26 स्क्वायर से लेके और 74 स्क्वायर तक कवर हो गया, ठीक है? और 75 स्क्वायर तो कवर कैसे हो रहा है? जो मैंने बताया था, numbers ending at 5, right? Then if you take Mool 100, 76 स्क्वायर से लेके 124 स्क्वायर तक कवर हो गया है. और 125 का स्क्वायर तो बताया था मैंने, तरीका वैदिक मैथ्स वाला था, बस वैदिक मैथ्स वे, राइट? VM is Vedic math. Then if the mool is 150, this will go from 126 square to 174 square. इसी कारण से, और इसके आगे भी मत करना, आगे हम और सीखेंगे, फिलहाल इतना ही सीखना है ना? और जैसे ही तुम इसको यूज़ करने लोगे ज़िंदगी में अपने, तो ऑटोमेटिकली और आगे बढ़ जाओगे. देखो अब बताऊँ मैं कैसे, मैं कितना मैं कहाँ तक पहुँच जाता हूँ. जैसे मान लो मुझे किसी ने बोल दिया कि बताओ यार 1512 का स्क्वायर क्या होगा. मैंने रैंडम नंबर लिया, अब मैं सोचूंगा मन में 1512, 1500 बेस 30 टाइम्स होना चाहिए, 360. अच्छा 225 है, फिर आगे 00 है, 360. ओके, सो 2286 144, ये आंसर होना चाहिए. कितना देर लगी मेरे को? नॉट इवन 10 सेकेंड्स. यू वांट टू चेक दिस ऑन द कैलकुलेटर? देखो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, पर मेरे को ज़रूरत है इसकी, कि मेरे को मज़ा आता है. आई एम प्रैक्टिसिंग मैथमेटिशियन. तुम भी यहाँ तक पहुँच जाओगे क्योंकि तुमने ना कैट फाउंडेशन से कर रहे हो. बाय बाय इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, सिर्फ यही नहीं करना, करना बहुत कुछ है ऑब्वियसली, लेकिन अगर तुम इसको अभी, जब तक कि मैं कैट का जो रियल वो शुरू नहीं करता हूँ, जो कि 18th की 21st से शुरू होगा, अगर तुम इसे हर दिन करते रहो, 10 दिन बाद 150 वाले जो बताया मैंने, 174 तक का तुम अगर 175 तक तुम अगर तुमने एक्सपर्टीज हासिल कर ली,
उसका तुम आप बढ़ जाओगे, ऑटोमेटिकली योर ब्रेन विल गो टू दैट. But what is the next interpretation of this Mool Varg Siddhant? Why I'm calling it this a Siddhant? Because that can go, देखो यहाँ तक पहुँच सकता है, और also this will be useful to know whether a number is a perfect square or not. ये यूजफुल, ये चीज करने के लिए इससे पहले हम लोग कैलकुलस यूज किया करते थे, पर आज के बाद हम ये यूज करेंगे, लेकिन तभी कर पाएंगे जब when you guys will be totally experts in this. Do you understand that? I need to check this. Is the answer correct? Hmm? So now, before we go ahead, I'll give you 10 questions. Okay? 10 questions. मैं उसी लिमिट तक दूंगा, 175 तक के लिमिट के, है ना? फिर क्विज में भी डाल दूंगा. तो अब मैं कहीं से भी ले कहीं तक जाऊंगा, 1 से लेके 175 तक कुछ भी दूंगा यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट इज 17 स्क्वायर, 37 स्क्वायर, 41 स्क्वायर. I'm writing randomly. I don't even know what I'm writing. 91 square, 121 square, 136 square, 181. 1 क्रॉस कर गया उस लिमिट को, है ना? 174 square, 137 square, 149 square. Your time 5 मिनट कर देते हैं. Starts now. एक महीने के अंदर तुम लोग उसी स्पीड पे पहुंचना, स्पीड पे मैं हूँ. उस स्पीड पे पहुंच गए ना अगर, तो मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ, फिर कैट में जितने लोग ये कर रहे हैं ना, किसी का भी कैट छूटेगा नहीं, ये तो कंफर्म है. इतने दिन तक फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस, और अच्छी बात है तुम लोगों ने शुरुआत से ही कर दिया कि हमारे पास प्रॉपर 11 महीने हैं, और 11 महीने अच्छे खासे होते हैं एकदम एक्सपर्ट बनने के लिए. अगला सेशन में मैथ्स की जगह लेने वाला हूँ लैंग्वेज का. समझ गए? कल होगा लैंग्वेज. कल मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लॉन्च करने वाला हूँ लैंग्वेज का. फिलहाल इसे सॉल्व कर लो, देन आई टेल यू. थोड़ा रीडिंग का भी काम करना ज़रूरी है ना, ये एग्जाम सिर्फ मैथ्स का तो है नहीं. लैंग्वेज, पजल्स, ये सब भी आने वाले हैं, है ना? ओके. हम्म.
Come on, tell me the answers. Wow. 17 स्क्वायर तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो याद ही होगा, है ना? 289। ऑलराइट। 37 square. It's 13 less than 50, right? 13 less than 50. So 25 minus 13 is 12. 13 square is 169. 6, 9 will stay. 1 goes here, becomes 1, 3. 1369। वंशज तुम्हारा गलत हो गया ब्रो। तुमने 49 लिख दिए, और ये गलती हमेशा होगी। तुमने 7 का स्क्वायर कर दिया है ना? करना 13 का स्क्वायर, ये गलती बहुत कॉमन गलती है। 41 का स्क्वायर, 50 से 9 कम है, 25 माइनस 9 इज 16, 9 का स्क्वायर इज 81। 73 स्क्वायर, 50 से 23 ज़्यादा है, 25 प्लस 23 इज 48, 23 प्लस 5 29, 29 रहेगा, 5 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 53, राइट? सो द आंसर इज 5329। 91 स्क्वायर, इसका मूल है 100, तो 9 को 2 बार कम किया, 18 कम हो गया, 82। 9 का स्क्वायर इज 81। यहाँ पे लोग ना 1 का स्क्वायर, ये प्रॉब्लम पता कब आती है आमतौर पे? डेफिसिट वाले केस, जब कम होता है। ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम नहीं आती, ज़्यादा है तो पता ही है यार कि अगर मान लो 49 होता, 9 का स्क्वायर कर दिया, और 41 में 1 का स्क्वायर करो दिक्कत हो जाएगी, है ना? 121। यही दिक्कत शायद ओजस्वा को पहली बार हुई थी पिछले वाले केस में। ये कितना है? 121 ज़्यादा, 21 टू ज़ार 42, 142। 21 का स्क्वायर इज 441, तो 41 रहेगा और 4 यहाँ चला जाएगा, 2 और 4 आपस में ऐड हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड में आई गेट 6, सो 146 फोर इज द आंसर। 136, 14 लेस देन 150। मूल 150 है, 150 क्या होता है? 3 टाइम्स, तो 14 का 3 टाइम्स इज 42। 42 कम करना पड़ेगा 225 से, बात सही है? सो 183 आ जाएगा, और 14 का स्क्वायर होगा 196, तो ये 1 यहाँ चला जाएगा, आई गेट 18496। इज दैट क्लियर? गौरव क्या हुआ जेड का? मैं 92 बन रहा है, आगे क्या आंसर की? अच्छा अभी बात करते हैं, इस सेशन के बाद खत्म होने वाला है। 174, 24 ज़्यादा है, ओके गौरव, 24 ज़्यादा है, सो 150। 225 प्लस 24 इज 249, 24 का स्क्वायर इज 576, 76 यहाँ, 5 इसमें ऐड हो गया, सो आई विल गेट 25476 एज द फाइनल आंसर। क्या मैंने सही किया है गलत किया बताओ? सही है या गलत है? हाँ, स्कोर चेक करूँ तुम्हारा मैं? एक मिनट यार, अगर सबका आंसर की आ गई, कब आई है आंसर की? कब आई है? अभी कुछ देर पहले? चलो, ये तो मैंने गलत ही किया ऑब्वियसली, 14 का स्क्वायर तो 196 होता है ना। ठीक है, सो 174, 24 मोर, 24 थ्री जार 72, 24 टू जार क्या था मैंने, है ना? 72 ऐड करना है किसमें? 225 में, सो 297 इज व्हाट आई गेट, एंड 14 स्क्वायर इज, हाँ मुझे पता है गलत है। ओके। 24 का स्क्वायर इज 576, 5 यहाँ ऐड हो गया। चलो खत्म करते सेशन को, फिर उसको देखते हैं जेड वाला, वही देखने लगा था मैं। ओके, 137, 13 कम है 150 से, 13 थ्री ज़ा 39, 225 माइनस 39 विल बी 186, और 13 का स्क्वायर इज 169, 1 goes here, so it becomes 18769। ऑलराइट, ये भी गलत है मेरा? ये भी गलत है?
वंशज, क्या गलती की तुमने? 149 का स्क्वायर सिंपल है 22201 because it is 1 less than 150 to 3 less than 225. So these are the answers. Just check your answers, everyone. Cool. ठीक है. So आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, है ना? तो हमारा इस 1 घंटे में तुम्हें, सोचो अगर कितना कुछ सीख लिया है तुम लोगों ने, इतना कुछ ज़बरदस्त चीज़ें हो गई हैं. तो मैं काम करूंगा, अगले आधे घंटे में अगले क्विज पब्लिश करने जा रहा हूँ. और जिस बार तुमने क्विज किया तो 100 क्वेश्चन वो हैं, और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस कितने दूंगा? 25 सवाल और दे दूंगा. ठीक है? जहाँ पे मैं सारे सवाल जो होंगे वो कैसे होंगे? वो तुम्हारे 76 के स्क्वायर से लेके और 174 के स्क्वायर तक होंगे. क्लियर? उस क्विज को भी सॉल्व कर लेना. और कल हम लोग क्वांट का मैथ्स का क्लास नहीं करेंगे. कल हम या तो लॉजिकल पजल्स करेंगे छोटी मोटी, या फिर हम कुछ रीडिंग के ऊपर करेंगे. ऑलराइट. और जो न्यूज़ थी वो ये कि मैं एक नया क्लब शुरू करने जा रहा हूँ. इट्स कॉल्ड रीडिंग क्लब. ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले. रीडिंग क्लब में क्या क्या रीड करने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, शुरुआत से कि कैट में वीआर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. राइट, मिड टू नाइट, ओके ओके. सो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. तो कल हम थोड़ा रीडिंग या पजल्स करेंगे, थोड़ा सा माइंड चेंज करेंगे, है ना? ठीक है. सो ऑलराइट देन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट. आई विल सी यू tomorrow and I'll send the quiz within 30 minutes, the next quiz. Bye bye.